What is a document? What is an instrument? A testamentary document or a non-testamentary document? Registration, will, contract. ये सारी टर्म्स हमें पता तो है, हमने सुनी भी है, बट कहीं ना कहीं अक्सर हमें इन टर्म्स के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन सारी टर्म्स को बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी. डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है, टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है. फिर हम कुछ और टर्म्स भी समझेंगे इस वीडियो में, लाइक अटेस्टेशन, एग्जीक्यूशन, registration. Hi, my name is Kritika Singh, and it's been over a decade now that I have been supporting and preparing students for Judicial Services Examination. Now, if I talk about the term document, is the term document defined anywhere in law? Yes, it is. It is defined under Section 3 of your Indian Evidence Act. And it is also defined under Section 29 of your Indian Penal Code. So अगर आप Section 3 Indian Evidence Act को अपना ओपन करते हैं और उसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड Section 29 की भी, तो वो कहता है, I have already put the definition on the screen as per Section 3 of your Indian Evidence Act. So Section 3 of your Indian Evidence Act states that a document is any matter which is expressed or described upon any substance. So किसी भी मैटर को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं either by words or by marks, किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, और या फिर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, किसी मैटर को, upon any substance. Substance can be, it can be a rock, it can be a leaf, it can be a paper, it can be a CD. By means of letters. Letters means A to Z, जो आपके letters होते हैं, alphabets, or marks, any symbol by marks, or by more than one of those means. More than one of those means मतलब letter और marks के अलावा अगर कोई और means है जिससे आप किसी मैटर को एक्सप्रेस कर सकते हो अपॉन एनी सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग एनी मैटर, लेट्स से थ्रू recording a CD. So in that case, you are expressing a matter upon any substance, let's say that CD, by not letters, by marks, but by speaking. But again, it says further that the state of mind, the mens rea has to be what? It should be with the intention that it should be used, or which may be used for the purpose of recording the matter. So that matter which you have expressed, it should be with the intention of being used for the purpose of recording the matter. So इस पूरी जो definition है Section 3 की, हमें उससे समझ में आता है कि document क्या है. Document जो है ये एक genus है, मतलब document can be any substance, can be any substance. किसी भी substance को आप यूज कर रहे हो which has been used for the purpose of recording, for the purpose of recording. अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये सेक्शन 3 कहता है for the purpose of recording. Recording what? Recording something. किस चीज के लिए? What is the why? क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? For perpetual memory. Perpetual memory. Perpetual means continuous. Continuous. Perpetual means continuous. So what is a document? It can be any substance which has been used for the purpose of recording something for perpetual memory. So it is a very, very wide term. It's a very wide term. Whereas if you see, now what is an instrument? Instrument is also a document. ये document है. But all documents are not instrument. Instrument जो है, it lays down
rights and liabilities. Now, the circle which I am highlighting in green color is an instrument. Why? Because it lays down certain rights and liabilities. ये कुछ rights and liability जो है lay down करता है और ये जो है ये document है. So all instruments are also documents, but all documents are not instrument. Now, if I take an example of the instrument, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको राइट्स और लाइबिलिटीज दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल चेक. नाउ दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिसरी नोट. सो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपको हमेशा क्या देते हैं? दे ऑलवेज ले डाउन सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज, वेयर एज द डॉक्यूमेंट्स do not always lay down rights and liability. The documents are just for the purpose of recording, and the instrument lays down the rights and liabilities. So an instrument is a document, but a document is not always an instrument. Now we are very clear with the term document. So document can be any substance upon which something can be recorded. कोई भी substance जिसको ऊपर आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो, अपॉन विच समथिंग कैन बी रिकॉर्डेड. अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये दो तरीके के होते हैं. हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द टेस्टामेंट्री एंड अदर इज द नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट. जो आपके टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम इनको कहते हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि इफेक्टिव होते हैं ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन. Testamentary documents are those documents in which the property is transferred by a dead person to a living person. So we say here the transfer is from a non-living person to a living person. So if I talk about your non-testamentary documents, these are those documents which operate immediately. They come into operation immediately. They are effective immediately. So here the transfer is, we use this term inter vivos. That is between living persons. Both the parties have to be alive, inter vivos. And here the transfer is from a non-living person to a living person. So testamentary and non-testamentary document. जैसे आप वर्ड टेस्टामेंट्री सुनो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए विल. विल इज ओनली इफेक्टिव ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन. और नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, देन लेट्स से सेल डीड, योर गिफ्ट डीड, योर लीज डीड, ये सारे जो है आपके non-testamentary document. Or transfer of property act is only dealing with non-testamentary document. Testamentary documents जो है, they are not covered under transfer of property act. So if you look into section 3 of your transfer of property act, it defines the term instrument. And it states that the term instrument means a non-testamentary instrument. Non-testamentary का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे हम non-testamentary, the word non
टेस्टामेंट्री मीन्स बिटवीन लिविंग पर्सन. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ले डाउन कर रहे हैं, बट वो कैसे है? बिटवीन लिविंग पर्सन्स, लाइक योर सेल, गिफ्ट, लीज डीड. ये आपके सारे क्या है? ये और ये सारे आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर है. सो नाउ वी आर वेरी क्लियर विद द टर्म डॉक्यूमेंट, which is basically any substance upon which something can be recorded, and it is defined and elaborated under Section 3 of your Indian Evidence Act and Section 29 of your IPC. Instrument is defined under Section 3 of your Transfer of Property Act. Instrument always lays down rights and liabilities. And then further we have non-testamentary and testamentary documents. Testamentary are effective only after the death of a person. Example, will. And non-testamentary effective immediately. And Transfer of Property Act only talks about non-testamentary documents. Testamentary documents are not part of TPA, not covered under TPA. And lastly, we will understand in this video that how is a document made. डॉक्यूमेंट को हम बनाते कैसे हैं? हम सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं और उस ड्राफ्ट के ऊपर जब पार्टीज साइन करती हैं, दिस एक्ट ऑफ साइनिंग इज कॉल्ड एज execution. So the act of signing is called as execution, and once it is signed, now this draft becomes a document. Then we have witnesses who will witness the execution. तो ये जो विटनेसेस होते हैं, जो एग्जीक्यूशन को विटनेस करते हैं, हम इनको कहते हैं अटेस्टिंग विटनेस. एंड दिस एक्ट ऑफ विटनेसिंग द एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अटेस्टेशन. सो अटेस्टेशन इन सिंपल वर्ड्स मीन्स witnessing the execution of a document. The execution of a document. And what is execution? Execution means signing. And the first step is basically the draft. Then is your signatures, that jisko hum kehte hain execution. Then we have attestation. And once it is attested, then finally we have to get it registered. Or registration जो है, it is basically recording the document in the register of the registrar. So जो registration है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो वो डॉक्यूमेंट है जिसपे अब हमने सिग्नेचर्स कर लिए हैं, पार्टीज ने सिग्नेचर कर लिए हैं, उसको हम कहते हैं कि इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, एंड
If the execution is witnessed by two people or more than two people, then that process is called as attestation. And after we have attested, we will get it recorded in the register of the registrar. That means it has now become a public record. It has now become a public record of transaction and public can have access to it. और उस process को हम कहते हैं और उसको हम कहते हैं registration. Thank you for watching. If you found this video useful, click on the subscribe and like button.